Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Beat. This is Amrita, your law faculty here at iExamB. iExamB is providing you coaching relating to all examinations. Online courses are there which you can give after your LLB, whether it is in the field of banking law officer examination, whether it is in the field of regulatory bodies like SEBI, RBI grade B and whatnot. सारे कोर्सेज चेकआउट कर लीजिए ऑन iExamB's वेबसाइट www.iexamb.com एंड एम्ब्रेस द iExamB लर्निंग एक्सपीरियंस विद अस. कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, वी आर देयर टू हेल्प यू. यू कैन रीच आउट टू अस बाय राइटिंग अस एन ईमेल ऑन hello@iexamb.com. You can also call us on the number 920-5524028. आप वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी अगर हमें लिखेंगे, इफ़ योर क्वेरीज आर वेरी जेन्युइन, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल. बट उसके लिए आपको पहले लीगल बी को सब्सक्राइब करना होगा. लीगल बी इज़ द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ iExamB, स्पेशली विच इज़ द लॉ चैनल. It is providing you guidance and preparation and content relating to all the latest updates in the legal field, relating to exam preparation strategies and what not. आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही डायनेमिक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू डील विद ऑल द मेजर अमेंडमेंट्स दैट वर पास्ड इन द ईयर ऑफ 2023. सो इस वीडियो को एंड तक देखिए. मैं बहुत ही क्विक एनालिसिस आपके साथ एक्चुअली डिस्कस करने वाली हूँ. पार्लियामेंट ने जितने भी मेजर अमेंडमेंट्स किए हैं 2023 में, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाकर देखेंगे तो काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, बट जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं हम उस पर फोकस करने वाले हैं. नॉट ओनली द 3 criminal law amendment bills, but other than that there are various other laws or areas that have been touched by the parliament. Colonial law especially has been in the topic. It has been the concern for the parliament which they are trying to replace, and still the lead is going on in 2024 itself. सो ये करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम प्रेपरेशंस के लिए भी, एंड नॉट ओनली द स्पेसिफिक लॉ एग्जाम्स बट फॉर यूपीएससी, एमपीएससी एंड ऑल ऑल्सो यू विल रिक्वायर दिस इन्फॉर्मेशन. सो ये वीडियो को ज़रूर आप देखिए एंड तक, एंड पीपीटी को भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं. यू कैन हैव अ रेडी रेफरेंस इन योर हैंड्स विद यू. सो लेट अस स्टार्ट with the topic of concern today, that is the bills. The Home Minister Amit Shah has recently proposed the bills that have also received the presidential assent. The bills are passed on the 3 principles of a person's freedom, human rights and impartiality. What has been added by the minister is that the 3 new laws reflect the spirit of the original Indian Code of Justice. So their main topic or their major area of concern is replacing the colonial laws basically, जैसे मैंने आपको कहा. सो ये 3 लॉज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको समझने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है लीगल बी पे, काफ़ी टाइम पहले जब ये लॉज आए थे. तो आप लीगल बी को सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर इन वीडियोस को देख लीजिएगा टू अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल. इंडियन एविडेंस एक्ट विच हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द भारतीय साक्ष्य सेकेंड बिल. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये सेकेंड बिल क्यों है, क्योंकि ये दोबारा से इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में. पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था एक बार, बट देन देयर वाज सम इश्यूज, सो इट वाज विथड्रॉन एंड अगेन अ सेकेंड बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर दीज 3 लॉज. एंड सेकेंड बिल 2023 साक्ष्य बिल जो है वो है एविडेंस एक्ट. इंडियन पीनल कोड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द भारतीय न्याय सेकेंड संहिता कोड है ये, इसलिए संहिता नाम दिया गया है. एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. बट द करंट स्टेटस ऑफ द लॉज, इफ यू विल सी, स्टिल दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड. गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन आने के बाद ही एक पर्टिकुलर एक्ट पास हो जाता है. फाइनली वी कैन से पास होने के लिए तो वो दोनों हाउसेज में पास हो ही चुके हैं. जितने भी बिल्स लॉज हम लोग आज डिस्कस करेंगे वीडियो में, वो सारे पास हो चुके हैं. They have received assent of the president also, majority of them. Some have become the act, but some have still not become the act. ये 3 laws को भी presidential assent मिल ही चुका है December end में. But then there is a lot of discussion on these 3 laws. As everybody knows, these are in the news every day. Because practically implementing these laws requires a lot of time. A lot of things have been introduced. A lot of electronic means we don't have the softwares for that yet.
इसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये सारी इम्प्लीमेंटेशन होने तक, गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन आने तक वी विल हैव टू वेट। एंड काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कशन आजकल चल ही रहा है रिलेटिंग टू दीज 3 लॉज जो आप लोग पढ़ ही रहे हैं। व्हेन दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ऑल टुगेदर ऑन 12th of December, दिस वाज द सेकेंड बिल आई एम टेलिंग यू व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, then passed in the Lok Sabha on 20th of December, passed in the Rajya Sabha on 21st of December. But still about the practical implementation there is a big question on these 3 laws still. अगर हम 3 laws की बात करें तो major change जो है वो है structural changes. सब्सटैंशियली कंटेंट में इतना चेंज नहीं है जितना हम कह सकते हैं, मीन्स पनिशमेंट्स में थोड़ा बहुत होगा इन IPC एज कम्पेयर, जैसे ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एक पूरा अलग चैप्टर ही बना दिया है, ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में बताया है, बट देन अल्टीमेटली स्ट्रक्चरली देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस इन दीज 3 लॉज। द बेसिक प्रिंसिपल्स जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, उसी तरीके से ये लॉज के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना वो सारे रिमेनिंग सेम ही हैं। So now the next amendments, Post Office Bill of 2023, as you can see over here, Post Office Bill ये भी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड colonial legislation को replace कर रहा है, that is the Indian Post Office Act of 1898. You can see the 1898 colonial legislation that was regulating our India's major department, that is the post department. It is a central government undertaking जो Ministry of Communication के अंडर आता है। So इसको रिप्लेस करने के लिए 2023 में एक बिल आया है और वो पास भी हो चुका है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, बट स्टिल इट इज़ वेटिंग इम्प्लीमेंटेशन। उसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस पर अभी तक ऑब्जेक्शन चल ही रहा है, काफ़ी ज़्यादा उसमें ऑब्जेक्शन ऑपोजिशन की तरफ से भी आया था, एंड सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन एक प्रोविजन पे लिया गया है, दैट इज़ डीलिंग विद द privileges that are provided to the government on the grounds of security. The government is having the power to intercept the postal articles. Intercept the postal articles, that means they will be having the authority to open the articles and also check what is there in it, which the government is having the powers with it. Government is retaining those powers. So these are the grounds on which public emergency, interest of public safety और tranquility पे ही ये होगा, but still ये काफ़ी ज़्यादा objectionable रहा है। डायरेक्टर जनरल एक बनाया गया है, दैट इज़ द मेन अथॉरिटी फॉर रेगुलेटिंग द सर्विसेज ऑफ द पोस्ट नाउ एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट, बट इसमें कोई भी एज सच पेनल्टीज़ नहीं है अगर हम देखेंगे, और ऐसा अगर कोई पावर यूज़ भी करती है गवर्नमेंट तो उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अगर बनाया होता तो इट वुड हैव बीन बेटर इन इम्प्लीमेंटेशन, ऐसा ऑब्जेक्शन आ रहा है। सो लेट अस सी व्हेन इट इज़ फाइनली इम्प्लीमेंटेड। इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड स्टिल। द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च में था, काफ़ी टाइम से ये आना ही था बिल, एवरीबडी वॉज नोइंग अबाउट इट कि ये आएगा ही, इस पर काम काफ़ी टाइम से चल रहा है, and it has also become an act now. Electronics and Information Technology is the ministry for it, and this is dealing with areas relating to your पर्सनल डिजिटल डेटा जो आपका है उसके प्रोटेक्शंस रिलेटेड। सो इट इज प्रोटेक्टिंग योर राइट टू प्राइवेसी विच इज़ अ फंडामेंटल राइट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ the individuals are having the right to obtain information, but at the same time their data should be protected, especially in the world of digitalization. Now this has to be protected. So this personal data or information that is there which we are giving at various places, there are certain norms for protecting it now, and consent is a must. You have to take the consent from the person compulsorily. These are the obligations, and relating to transfer of personal data, when you are transferring it outside India, how it is going to be done, it will be restricted. There is a data protection board now that is established as per this law, and also there is a penalty provisions have also been passed in this particular act. So this has become an act, and this is as per the Supreme Court judgment also, right to privacy से related, जिसको आगे extend किया गया है, लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा challenges हैं, and इसको भी काफ़ी ज़्यादा criticism भी चल रहा है. So that is ultimately, it is a part of a democratic process that the laws will be passed, will be criticized, and like this only there will be a system of checks and balances that will be maintained. नेक्स्ट इज़ द एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023। एडवोकेट्स एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया है, एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961, एंड ये एक्ट जो है
ये लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट ऑफ 1879 को भी रिप्लेस कर रहा है। लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट अब ऑब्सोलीट हो चुका है एंड एज आई टोल्ड यू कॉलोनियल लॉज को काफ़ी ज़्यादा कंसर्न में रख के ये सारे अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं एंड दिस इज व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट नाउ. So now what is the main provision which they have focused on over here in the Advocates Amendment Bill or the act which has become an act also? They are focused on the provision of touts. What are touts? Touts are the people who are trying to do marketing in the profession of advocacy, which is strictly against the professional ethics. So इसको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रखा गया है इस अमेंडमेंट में कि अगर कोई टाउट है या कोई टाउट की लिस्ट में आता है देन अल्टीमेटली इज गोइंग टू सफर इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months और फाइन अप टू 500 rupees or both, and that is definitely going to affect his practice as well, because if people are doing such kind of practices in the profession of advocacy then that is not definitely good, because they are trying to do all these kind of activities, procure the employment of their legal practice as a legal business in terms of money. So they are doing this in the premises of revenue officers, in the premises of courts. So if such kind of people are identified then definitely they will be imprisoned or they will be fined. कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था एज इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल. जो वुमेन्स रिजर्वेशन आया है अभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. सो लोकसभा में legislative assemblies में now we need to have reservation for the women because the number has been low only, and ये काफ़ी टाइम से 1996 से ये प्रपोज होते आ रहा है बट इट नेवर गॉट सक्सेस. सो फिर नेक्स्ट टाइम फाइनली इन्होंने अभी इसे इंट्रोड्यूस किया है एंड नाउ दिस हैज़ बीन successful also. Only a technical thing is left, that is it will become effective after the census has conducted. Census is required for these kind of bills. Reservation related के लिए census की ज़रूरत होती है. So after the census is conducted the bill will be commenced. Government notification pass होगा और ये bill commence हो जाएगा. So this will be reserving the women seats, and that is how much? That is going to reserve the seats for the women in Lok Sabha, and this is going to be done not only in Lok Sabha, in the legislative assemblies as well. So ये काफ़ी मेजर चेंज है जो अभी आ चुका है एंड ये काफ़ी ज़्यादा वेलकम भी किया गया है. एंड ये रिजर्वेशन एक्टिव रहेगा कब तक? दिस विल बी एक्टिव अप टू 15 years now. You should definitely go into the details of this bill also. It is a very very important topic for us to study nowadays. So constitutional laws related है definitely. It was passed in Rajya Sabha on 21st of September finally. 19 September को introduce हुआ था, 21st तक ये पास भी हो चुका था. द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2023 ये भी कॉम्पिटिशन एक्ट बन चुका है अभी. कॉम्पिटिशन को रेगुलेट करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, कॉम्पिटिशन हेल्दी होना चाहिए. दिस इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट, नो डाउट. बट उसमें जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, जो भी ऑपरेशंस है बेसिकली वो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट में होनी चाहिए. एंड इवन द पेनल्टी प्रोविजन हैज़ बीन एडेड, एंड ऑल्सो द मर्जर एक्विजिशन अमेलगमेशंस जो होते हैं, जो 2 करोड़ से ऊपर होते हैं, दे नीड टू हैव अ रिव्यू और परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. नाउ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बिना इतने बड़े बड़े मर्जर और अमेलगमेशन ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते. दिस इज़ अ वेरी मेजर चेंज दैट हैज़ बीन एडेड, and the Competition Commission of India is having the power to do that. Then the definition of control has been improvised in this particular law now, which is including the concept of material influence. This is acknowledging that the ability to exert significant influence over the management, affairs or strategic commercial decisions of an entity or group of entity is a key factor. So ये key factor है किसमें? In determining the control now. So ये competition law में काफ़ी change आया हुआ है. This has been passed, it has become an act as well. Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment conditions of service and terms of office bill 2023. अब इसमें क्या change आया है? Now democracy, everybody knows in democracy election is a very very important area. Election Commission जो पहले एक्ट था, दैट वाज कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991. इसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया गया है
and now this is focusing on their appointment of election commissioner, chief election commissioner and election commissioners, उनके appointments, उनके conditions of service and terms of office. अब इसमें काफ़ी ज़्यादा थ्रेट टू डेमोक्रेसी बताया गया है, बिकॉज अल्टीमेटली दिस हैज़ कम इन द हैंड्स ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी, और ये सिलेक्शन कमिटी के मेंबर्स कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन लीडर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर, एक उसमें से होगा यूनियन कैबिनेट से. सो ये कम्प्लीटली मिनिस्ट्री या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जा चुका है. दैट इज़ व्हाट इज़ द एग्जीक्यूटिव्स. कैबिनेट के मेंबर्स, मिनिस्टर्स, ऑपोजिशन लीडर भी है, बट देन इट इज़ अल्टीमेटली गोइंग इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. इट इज़ गोइंग इन द हैंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स. इट इज़ अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी. इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया है, एंड इसलिए ये अभी तक इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है. वी कैन से दैट इसका भी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक बाकी है. दो इट इज़ पास इन द राज्यसभा एज वेल. प्रेसिडेंशियल असेंट भी आ ही जाता है, बट देन passing or implementing the laws is ultimately a challenge, because the Supreme Court has given verdicts many times that completely it should not be in the hands of the executives. And ये constitutional assembly debates अगर आप जाके देखेंगे, उसमें भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यही बात कही थी. उन्होंने कहा था that this should not go in the hands of the executives, but then इसमें अगर आप देखोगे ultimately it has gone in the hands of the executives as per this law. And also the salaries has been equivalent to a cabinet secretary. मतलब अब पहले सुप्रीम कोर्ट जज के equivalent था, but now it has come ultimately into their hands. It is equivalent to the cabinet secretary now. So these are the issues with this particular bill. Article 324 of the Constitution अगर आप देखोगे तो और आपको इसके बारे में डिटेल में समझ में आएगा. एंड जो आर्टिकल ऐड हो रहा है इसके लिए, दैट इज़ इन कॉन्स्टिट्यूशन 334A, वो भी कोरिलेट हो जाता है यहाँ पे. सो वो आप एक बार चेक कर सकते हैं. आई एम सॉरी, 334A जो वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए था, वो आप चेक कर सकते हैं एंड यू कैन गेट इट मोर क्लैरिफाइड. मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इन लॉज के बारे में. दीज ऑल लॉज हैव देयर एंटायर हिस्ट्री इन देमसेल्व्स, सो यू नीड टू गो इनटू द डिटेल्स एंड स्टडी. कोई भी अगर क्वेरीज या डाउट्स हैं, या अगर आपको लगता है कि मैम आपने ऐसा बताया लेकिन ये ऐसा है, do point it out, do discuss with me. You can reach out to me by any of the methods which I have mentioned you in the starting of the video itself. आप इस वीडियो के comment section में भी reach out कर सकते हैं. Definitely we will try to have a discussion with you. Telecommunications Bill 2023, ये भी पोस्टल की तरह ही एक मेजर लॉ को रिप्लेस कर रहा है. दैट इज़ द टेलीकम्युनिकेशंस बिल. जो पहले टेलीग्राफ एक्ट था, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, ये सारे लॉज अब वी कैन से दे नीड टू बी रिप्लेस्ड ऑल्सो. And now the new law, Telecommunications Bill, is establishing and operating telecommunication networks as per the updated technologies, though, providing telecommunication services to the people and possessing radio equipments. All these are being regulated by this act now. But then ultimately यहाँ पे भी एक objection है, that is relating to the interception of the telecommunication. Government has kept this with itself, that the interception on the telecommunication on the grounds of state security of the state, public order, prevention of offences, these have been kept with the government. Same चीज़ post में भी है, parcels को detain किया जा सकता है on these grounds. Similarly, गवर्नमेंट ने टेलीकॉम के लिए भी ये प्रोविज़न रखा हुआ है, एंड इसी ग्राउंड पे यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी काफ़ी हुआ है, एंड अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है. So these are the major changes, these are the major amendments that have been passed in 2023. Definitely you should go into the details of all the laws being associated with the law discipline. It is very, very important for you. So you go through it. If any queries are there, do reach out to us, write to us in the comment section of this video. Thank you everybody. Have a nice day.